This crystallization is again one of the unit operation from your pharmaceutical engineering, and this chapter is again important for your GPAT Niper and other exams. Every year you can expect at least one or two questions from the GPAT exam as well as in the Niper exam and other exams also. So this year also there was a one question from this crystallization chapter in the GPAT 2023. So what was the question? We'll discuss at that point. First of all, what do you mean by crystallization? So crystallization का definition क्या है? Crystallization क्या होता है? So crystallization is nothing but the spontaneous arrangement of particles into a respective orderly array, and that is nothing but the spontaneous arrangement of particles in a regular geometric pattern. So that is nothing but the crystallization. So what is crystallization? It is nothing but the spontaneous arrangement of particles into respective orderly array, and that is nothing but the regular geometric pattern. क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो सॉल्यूशन है उसमें जो कंपाउंड रहेगा, तो उसकी जो पार्टिकल्स है, उसकी जो आयन्स है, उसके जो मॉलिक्यूल्स है, इन द सॉल्यूशन योर कंपाउंड इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आयन्स और इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स और इन द फॉर्म ऑफ particles. Okay, now after the super saturation, so there is a development of attractive forces, and that creates a crystallization. That is nothing but the definition is nothing but the spontaneous arrangement of particles or molecules or ions respective orderly array in an orderly manner. That is nothing but the regular geometric pattern. So that is the definition of crystallization. So we'll see the process of crystallization, how crystallization is there. There was once a question in GPAT. Crystallization is exothermic process. Crystallization is exothermic process. So there are two kind of process, exothermic process and endothermic process. So what do you mean by exothermic process? So exothermic process is nothing but the process in which heat energy is released. तो exothermic process क्या होता है? तो उसमें heat energy release होता है. Heat is evolved, okay, in that process. So known as exothermic. Now what is mean by endothermic? So endothermic means where there is a absorption of heat. Endothermic means there is a absorption of heat. Exothermic process, heat is released, that is the heat of solution. What's the heat? Heat of solution. So in the exothermic reaction, heat is released or heat is evolved. So in case of crystallization, it is a exothermic. The crystallization होता है तो heat क्या होता है? Evolve होता है, heat release होता है. जब आप solution का crystallization करेंगे तो उसमें आपको जो solution beaker में रहेगा वो आपको warm लगेगा, गर्म लगेगा, because it is a exothermic reaction, exothermic process. Heat is a released, heat is a evolved during crystallization. इसके ऊपर question आ चुका. Endothermic process means the process in which there is a utilization of heat or absorption of heat. So heat is absorbed in the endothermic process, and in the exothermic process heat is released. Okay, so you have to clear regarding this. There was a question once on a crystallization. One of the following process is a exothermic. Question was like that. One of the following process is a exothermic. Okay, and there was options, different options. So one of the option was crystallization. So remember, crystallization is an exothermic process. Now what is meant by how there is a crystallization? Normally what happens, particles they are present in the matter. कोई भी एक matter है आपके पास में, ठीक है, मे बी लिक्विड और सॉलिड, ठीक है, मे बी लिक्विड, सॉलिड और गैसेस. सॉलिड मतलब तो वो तो क्रिस्टलाइजेशन होने के बाद में होता है. से फॉर एग्जांपल यू हैव मैटर, you have a compound in the liquid form or in the gaseous form. So what happens? Particles they are present in the matter in a random order. Particles are randomly present in the matter. Particles are randomly present in the matter due to thermal agitation. Thermal means heat, agitation means mixing. Due to thermal agitation, particles are present in the matter randomly. Means there is a disorderliness. ऑर्डरलीनेस मतलब क्या है? एक के बाद दो, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसा ऑर्डर होता है. सो डिसऑर्डर मतलब नथिंग, मतलब मिक्स अप. सो पार्टिकल्स दे आर प्रेजेंट इन अ रैंडम मैनर और दे आर प्रेजेंट इन द रैंडमली इन अ मैटर ड्यू टू थर्मल एजिटेशन. ओके, नाउ इन केस ऑफ गैसियस स्टेट और इन केस ऑफ गैसियस मैटर, दिस disorderness or disorderliness is higher. Disorderliness of particles in the gaseous state, it is the highest. So gaseous disorderliness in the gaseous matter highest is there, and in case of liquid moderate disorderliness. तो gaseous state में
बहुत ज़्यादा डिसऑर्डरलीनेस होता है पार्टिकल्स का, मतलब रैंडमनेस बहुत ज़्यादा होता है इनके साथ गैसियस स्टेट, बट लिक्विड में थोड़ा सा मॉडरेट होता है। सॉलिड में क्या होता है कि देयर इज अ ऑर्डरनेस, disorderness is there in case of gaseous state and liquid state due to thermal agitation, but in case of gaseous state there is a highest disorderliness, in case of liquid there is a moderate disorderliness, and in case of solid there is a orderliness. Solid में क्या है, ऑर्डर में रहते हैं पार्टिकल्स, लिक्विड में क्या है, उसमें थोड़ा सा डिसऑर्डरलीनेस रहता है और डिसऑर्डरनेस रहता है, लेकिन गैसियस स्टेट में बहुत ही ज्यादा डिसऑर्डरनेस रहता है। व्हेन these particles they develop attractive forces, when these attractive forces between the particles they are strong enough to overcome the disorderliness, so there is a crystallization. So in case of gaseous state, particles they are present in the gas in a disorderly manner due to thermal agitation. Particles in the liquid they are present in the disorderly manner moderately because of the thermal agitation. Okay, now when these particles will develop attractive forces or attraction forces which are strong enough to overcome the disorderliness. So at that time there is a crystallization. At that time there is a next term is the supersaturation. Supersaturation means what? So what do you mean by supersaturation? A solution will become supersaturated when solubility of solid in the solvent will exceed saturation solubility. Supersaturation means what? A particular compound has some solubility in the solvent. जैसे होता है आप 10 ml वाटर लो, उसमें शुगर डालो, कितना शुगर डिजोल्व हो सकता है उसमें, हो सकता है आपका, ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 ग्राम हो गया, 6 ग्राम, 7 ग्राम, so in 10 ml water you can dissolve 5 gram, 6 gram of sugar, but if you dissolve 10 gram of sugar in the 10 ml water, what will happen? So there will be supersaturation of that solution, and there will be crystallization. Okay, so supersaturation means what? Supersaturation means what? Solution will become supersaturated when solubility of solid in a solvent will exceed saturation solubility, and then there is a crystallization. सुपर सैचुरेशन मतलब क्या कि उस सॉल्वेंट में आपका जो कंपाउंड है उसका डिसोल्यूशन लिमिट एक्सीड हो गया है, डिसोल्यूशन जितना सोलिबिलिटी है उसका उससे ज्यादा कंपाउंड आपने उसमें डाल दिया तो वो सुपर सोलिबिलिटी बन जाए, तो सुपर सैचुरेटेड सैचुरेशन हो गया है उसका, वो सॉल्वेंट में आपने जो कंपाउंड डाला है उसका जो सोलिबिलिटी है उसका जो सैचुरेशन पॉइंट है वो सैचुरेशन हो गया है उसका, और भी कंपाउंड डालेंगे तो it will go in the next level, that is known as the super saturation. So solution will become super saturated when a solubility of solid in a solvent exceeds saturation solubility, and at that time the compound will be crystallized. Okay, now what are the different applications of crystallization? There are numerous applications. So for example, purification of drugs. So after the synthesis of particular drug, आप क्या करते हो, लैबोरेटरी में भी, आप लैब में भी है, सिंथेसिस करने के बाद में क्या करते हो, आप रिक्रिस्टलाइज करते हो. व्हाई यू आर डूइंग रिक्रिस्टलाइजेशन आफ्टर सिंथेसिस? फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रग. ओके, देन फॉर द बेटर स्टेबिलिटी. फॉर द बेटर स्टेबिलिटी, सो प्योर क्रिस्टल विल हैव अ हायर स्टेबिलिटी. अगर क्रिस्टल आपका प्योर है तो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है. So for better stability, for better chemical stability, you are doing crystallization to improve the physical stability. To improve the physical stability. To improve the flow rate. For example, crystals they can easily flow from the tablet making machine, hopper part of tablet making machine towards the die cavity. So crystals they are free flowing. Their kinetic properties. Again, improvement of bioavailability. Improved bioavailability. So some different crystalline form will have different physicochemical properties. जैसे होता है कि some drugs, some compounds will show polymorphism. So each different crystalline form will have different physicochemical properties and different solubility, different dissolution, ultimately different bioavailability. In case of penicillin G, crystallization of penicillin G recrystallization will increase the bioavailability. What do you mean by crystalline solid? Crystalline solid क्या होता है? So in the crystalline solid, it is one of the form of compound. So there are different forms of compound. Some compounds are present as a crystalline state. Some compounds are present in the amorphous form. Compound may be
present in the crystalline form or in an amorphous form. ये important part है. You have to pay attention. So what is meant by crystalline form of compound? So compound may be present in the crystalline form or may be present in the amorphous form. So it depends on the nature of compound. Now what do you mean by crystalline form or crystalline solid? Now in case of crystalline solid, you will have a definite shape. Crystal का क्या है कि definite shape होता है. Crystal will have a definite shape and there is a orderly arrangement of units. So unit means what? Unit means it is a basic structural part which form a crystal. It is a basic structural part which form a crystal. So it may be either ions, it may be either molecules or it may be either particles. तो क्रिस्टल बनने के लिए जो यूनिट लगता है, जो यूनिट पार्ट होता है आपके कंपाउंड का, वो क्या हो सकता है? वो आपका मॉलिक्यूल हो सकता है, वो आपका आयन हो सकता है या फिर वो आपका पार्टिकल हो सकता है. So arrangement of that ion, arrangement of that particle, arrangement of that molecule in a orderly arrangement of that units, which will give you definite shape, and that kind of arrangement is known as a crystalline solid. So crystalline solid will have a definite shape, orderly arrangement of units, and because of the orderness, यहाँ पे क्या है? Orderly arrangement होता है. Because of the orderness, it has a less energy or low energy, and that's why it has a low solubility. So crystalline have a definite shape, orderly arrangement, low energy, low solubility, definite melting point, and it is incompressible. Now what do you mean by amorphous? So amorphous form of solid will not have specific shape. So amorphous form of solid will not have any specific shape, and there is a random arrangement. There is a structural units, they are arranged randomly. Okay, so there is a random arrangement of structural units or particles in the crystal lattice, and it has a higher energy, and that's why it has a higher solubility. So amorphous form is always more soluble than crystalline form. You have to remember, you have to note down. Okay, so amorphous form of compound will have more solubility as compared to crystalline form. So amorphous form जो है उसका solubility ज़्यादा होता है crystalline. I will explain this again. They are going to come in now. Now what do you mean by polymorph? Okay, what do you mean by polymorph? If a compound exists in a different crystalline form, अगर एक ही compound है उसका बहुत सारे different crystalline form है. So if compound exists in one or more crystalline form, okay, the phenomenon of formation of more crystalline form is known as a polymorphism. The phenomenon of formation or existence, if a compound exists in a different crystalline form, अगर कोई compound के different crystalline form है, जैसे alpha, beta, gamma, in case of cocoa butter में क्या होता है कि cocoa butter will crystallize in a different form, alpha, beta, gamma. So all these are known as a polymorph, and the phenomenon of formation of different crystalline form, they are known as a polymorphism. If a compound exists in a more than one crystalline form, the phenomenon is known as a polymorphism, and it is very important. Each and every polymorph will have different physicochemical properties. ये polymorph जो होते हैं different crystalline form, they will have different physicochemical properties. जैसे for example density, then melting point, then okay, solubility, dissolution, etc. Every polymorph will have difference in these properties like density, then melting point, then solubility and dissolution. Right? You have to understand this polymorphism because whatever formulation you are designing, whatever formulation you are making, so the compound, if it is a polymorph, so you have to take into consideration the polymer form, stability. So different polymer form of same compound will have different stability. कंपाउंड तो एक ही है, उसका स्ट्रक्चर एक ही है, उसका टेस्ट भी रहेगा, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट भी एक ही आएगा, लेकिन वो क्रिस्टलाइज डिफरेंट फॉर्म में होता है, उसको बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म. और हर एक पॉलीमॉर्फिक फॉर्म जो होता है, तो हर एक पॉलीमॉर्फिक फॉर्म विल हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. उसका सोलिडिटी अलग रहेगा, उसका स्टेबिलिटी अलग रहेगा, ओके, उसका डिसोल्यूशन अलग रहेगा, उसका डेंसिटी अलग रहेगा. सो यू कैन सी एग्जांपल 63% of barbiturates, 63% of barbiturates, 63% of barbiturates, 67% of steroidal drug, and 40% of sulfa drugs. So they exhibit polymorphism. They shows polymorphism. So polymorphism is nothing but the existence of compound in a different crystalline form, or if compound is able to crystallize in a different crystallized form, known as a polymorphism.
जैसे बार्बिट्रिक एसिड डेरिवेटिव, बार्बिट्रेट जो ड्रग होते हैं सेडेटिव हिप्नोटिक्स, सो दे आल्सो शो 63% पॉलीमॉर्फिज्म। जो स्टेरॉइड्स होते हैं 67% पॉलीमॉर्फिज्म होता है, 40% सल्फर ड्रग्स पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टल? प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल क्या होता है? इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ crystal is nothing but the solid particle which is formed by solidification or crystallization process under suitable condition. Crystal क्या होता है? Crystal is nothing but the solid particle, or it is a solid particle of compound which is formed by solidification process or crystallization process under suitable condition. मतलब suitable condition क्या होगा? Super saturation, temperature, okay, under suitable condition, temperature and pressure. So crystal is a solid particle formed upon solidification or crystallization process under suitable condition in which, इसमें क्या होगा? structural units are arranged by fixed geometric pattern. So crystal is nothing but the solid particle which is formed by solidification or crystallization process under specific or suitable condition in which, इसमें क्या? structural units, so basic unit which will form a crystal, that is known as the structural unit. So they are arranged in a fixed geometric pattern to form a crystal lattice, known as a crystal. Okay. Now, what is crystal lattice? Crystal lattice is also known as space lattice. Crystal lattice is also known as space lattice, and it is a orderly internal arrangement of particles in a three-dimensional space. Question आता है, so orderly internal arrangement of particles in a three-dimensional space is known as, ऑप्शन में आएगा क्रिस्टल, उसके बाद में आएगा यूनिट, उसके बाद में आएगा आपका पार्टिकल्स. सो क्रिस्टल लैटिस इज व्हाट, और स्पेस लैटिस इज व्हाट? सो यूनिट. ओके, सो देयर इज अ ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द थ्री डायमेंशनल स्पेस, और देयर इज अ ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स which will form a crystal in a three-dimensional space, that is known as a crystal lattice or crystal space, or crystal lattice or space lattice. ये दोनों टर्म्स क्या है? सिनोनिम्स, crystal lattice and space crystal. So it is a orderly arrangement of particles in three-dimensional space, so known as a crystal lattice or space crystal. There is one technique known as X-ray diffraction. यहाँ पे एक एनालिटिकल टूल है. This is the analytical technique, X-ray diffraction. In a short form, it is known as XRD. XRD मतलब X-ray diffraction. So this technique is used to know the three-dimensional arrangement of units or particles or molecules in the crystal lattice. So to study the crystal lattice, the technique is nothing but the X-ray diffraction. X-ray diffraction क्या है? It is a technique. It is an analytical technique to study the crystal shape, okay, and arrangement of particle in three-dimensional space, that is the crystal lattice. So to study the crystal lattice, X-ray diffraction, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. Okay, so you have to remember this. Now we'll see the next definition. What do you mean by unit? So crystal में, so crystal is built, crystal is developed, crystal is formed from a one structural unit. Crystal is formed from a one structural unit, which will build a whole crystal. So what is that unit? Okay, crystal कहाँ से बनेगा? Crystal बनेगा unit से. तो unit क्या है? Unit क्या हो सकता है? So unit present in the crystal. It may be either क्या हो सकता है? Ions, atoms or molecules. So ions or atoms or molecules of your compound. Ions, atoms or molecules of your compound, they will form a unit. They can be called as a unit. मतलब इनको आप unit बोल सकते हो. They can be regarded as a unit. So these ions, atoms or molecules of compound, they can be regarded or they can be called as a unit. And these ions, these molecules, atoms, if they are arranged in an orderly manner in a crystal lattice to form a crystal. So crystal का basic unit क्या होता है? Either ions or atoms or molecules. जैसे for example सोडियम क्लोराइड, जो सॉल्ट होता है आपको सोडियम क्लोराइड, तो उसमें क्या है? दो आयन है, सोडियम है प्लस क्लोराइड है. तो जब सोडियम अलग आयन रखेंगे आप, क्लोराइड आयन अलग रखेंगे, तो उसको क्रिस्टल नहीं है. बट सोडियम क्लोराइड जब
साथ में आएंगे and particular arrangement होगा उनका, so that will give a sodium chloride crystal. So unit in the crystal may be either ions, atoms or molecules, right, or you can say particles. Now for example, so there may be electrostatic attraction in the ions, okay. So unit में क्या हो सकता है, electrostatic attraction of opposite charge. For example, sodium chloride. Sodium chloride में क्या है, sodium has a positive charge and chloride has a negative charge. So there is a electrostatic attraction. There is a electrostatic attraction between two particles. So in case of sodium chloride, sodium has a positive charge and this chloride has a negative charge. So there is electrostatic attraction of opposite charge in case of sodium chloride, or there is a covalent bonding formation in case of, for example, diamond and graphite, or there might be van der Waals forces and hydrogen bonding in case of naphthalene and para-hydroxybenzoic acid. तो नेप्थलीन में क्या है, नेप्थलीन में वैन डर वाल्स फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग. पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में क्या है, वैन डर वाल्स फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग. NaCl सोडियम क्लोराइड में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. ग्राफाइट में, डायमंड में क्या है, देयर इज अ कोवेलेंट बॉन्ड. तो मतलब सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, उसमें कौन सा फोर्स है, यूनिट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है. जैसे आपका ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है, उसमें क्या है, so there is a covalent bonding. So in case of naphthalene and para-hydroxybenzoic acid क्या है, van der Waals forces and hydrogen bonding. So you have to remember. So एक बार क्वेश्चन आ चुका है NaCl के बारे में, electrostatic attraction of oppositely charged. What do you mean by unit cell? Unit cell means what? The smallest geometric pattern, smallest geometric part, which will build a whole crystal. क्रिस्टल जो फाइनल क्रिस्टल होता है, एक क्रिस्टल उसको बनाने के लिए छोटा सा एक यूनिट पार्ट होता है, यूनिट सेल. सो यूनिट सेल इज नथिंग बट द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिक पार्ट दैट विल बिल्ड ए होल क्रिस्टल. द क्रिस्टल इज बाउंडेड बाय प्लेन सरफेसेस कॉल्ड एज फेसेस. तो मान लीजिए आपके पास में एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल्स, ओके. सो यूनिट सेल मींस व्हाट, स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिक पार्ट व्हिच विल बिल्ड अ होल क्रिस्टल. तो इसमें होता है छोटे से स्क्वायर हो गए पूरा क्रिस्टल बनेगा. सो दिस वन पार्ट बाय व्हिच होल क्रिस्टल इज मेड, और द पार्ट, सिंगल पार्ट फ्रॉम व्हिच होल क्रिस्टल इज मेड, दैट सिंगल पार्ट इज नोन एज अ यूनिट सेल. नाउ क्रिस्टल आर बाउंडेड मतलब ये बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है, क्रिस्टल आर बाउंडेड बाय प्लेन सरफेसेस. यहाँ से ये एक सरफेस रहेगा, तो ऑल दिस सरफेसेस known as a faces. Crystal is bounded by plane surfaces known as a face or faces. In a crystal, angle between two intersecting cell, unit cell क्या होता है, यूनिट सेल मतलब एक बेसिक यूनिट होता है जिससे आपका पूरा क्रिस्टल बनेगा, उसको बोलेंगे यूनिट सेल. ठीक है. अभी क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टल को सरफेसेस होते हैं, ठीक है, प्लेन सरफेस, उसको बोलते हैं क्रिस्टल फेस. क्रिस्टल एंगल किसको बोलते हैं, क्रिस्टल एंगल इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग फेसेस इज नोन एज एक्सियल एंगल. ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय एक्सियल लेंथ. सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू एटम. जैसे सोडियम क्लोराइड में क्या है, टू एटम है, सोडियम प्लस क्लोराइड, तो इसमें कितना डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज एक्सियल लेंथ. सो एक्सियल लेंथ इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन centers of two atoms, that is axial length. These are the different important terms related to crystal lattice. क्रिस्टल लैटिस में क्या क्या होता है कि उसमें यूनिट होता है. तो क्रिस्टल लैटिस क्या है, उसका एक नथिंग बट द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन द थ्री डायमेंशनल स्पेस नोन एज क्रिस्टल लैटिस. देन उसका यूनिट क्या होता है, यूनिट मतलब यूनिट उसका होता है यूनिट सेल. यूनिट सेल मतलब क्या, सो इट इज द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिक पार्ट which will build up a whole crystal. यूनिट सेल किससे बनेगा, यूनिट से बनेगा. यूनिट क्या क्या हो सकता है, यूनिट में भी आएगा आयंस और एटम्स और मॉलिक्यूल्स. तो आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल रहता है आपके सॉल्यूशन में, कंपाउंड का सॉल्यूशन में आयंस रहेगा या फिर उसका मॉलिक्यूल्स रहेगा, वो उसका एटम रहेगा. ठीक है, वो उसको क्या बोलेंगे अपन, यूनिट. ऐसे यूनिट एक में के साथ में आएंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस बना, अट्रैक्टिव फोर्सेस आर देयर. So these units, these ion or atoms, they will come together, or these molecules will come together to form a unit cell. Unit cell बनाएंगे, and unit cell से बनेगा आपका क्रिस्टल.
ठीक है, यूनिट सेल से बनेगा क्रिस्टल, राइट। नाउ एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न इज यूजफुल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। सो ये एनालिटिकल टूल होता है, एनालिटिकल टेक्निक। सो यूजिंग एक्सरे डिफ्रैक्शन यू कैन एनालाइज द क्रिस्टल शेप geometry, okay, known as X-ray diffraction. So in the X-ray diffraction there is a one equation known as the Bragg's equation. X-ray diffraction में एक equation होता है, उसको बोलते हैं Bragg's equation. n lambda is equal to 2d sin theta. n lambda is equal to 2d sin theta. उसको बोलते हैं Bragg's equation. So n lambda is equal to 2d sin theta. So that is the X-ray diffraction pattern. तो क्या होता है when we'll see X-ray diffraction at the time. Now these atoms, these ions or these particles or these molecules of compound or ions of compound or particles of compound, so they will form a unit cell and unit cell will form a crystal. Because of the particular arrangement they will develop a shape, okay? So three-dimensional arrangement of particle in the crystal, that is known as a crystal, okay? There are three dimension, means there are three, okay? So there are three, say alpha, beta, gamma. There are three angles, alpha, beta and gamma. The angle between intersecting faces, the angle between two intersecting faces, two perpendicular to the crystal lattice, is known as the axial angle. So axial angle, here I got axial angle. So dimension of this is known as axial angle. So depending upon the arrangement of different units, different particles, different molecules, different units in the crystal, so depending on the arrangement, so there is a development of particular shape depending upon the arrangement of molecule. क्रिस्टल में जो मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं, इसमें जो यूनिट्स है, वो पर्टिकुलर एंगल में पर्टिकुलर अरेंजमेंट रहेगा उसका, तो उसके ऊपर उसका शेप डिपेंड करता है. सो देयर आर डिफरेंट शेप्स ऑफ क्रिस्टल. फॉर एग्जांपल क्यूबिक, सो यू कैन सी हियर इट इज अ क्यूबिक शेप. एंगल, एक्सियल एंगल ऑफ थ्री प्लेन्स, alpha, beta, gamma, all are the 90 degrees. So another shape is known as a tetragonal. Tetragonal, in case of tetragonal also alpha, beta, gamma axial angles, they are 90, all axial angles. ठीक है, जैसे ये एक होगा, ये एक होगा, all these axial angles they are 90 degree to each other. Again another shape is known as orthorhombic, उसमें alpha, beta and gamma वो भी 90 है. Now another shape is known as a monoclinic. मोनोक्लिनिक, अल्फा एंड गामा 90 होता है, इसमें बीटा अलग होता है. हेक्सागोनल, हेक्सागोनल इसमें गामा 120 एक्सियल एंगल होता है, अल्फा बीटा 90 होता है. अनदर शेप ऑफ क्रिस्टल रोम्बोइडल, रोम्बोहाइड्रल. ओके, सो अगेन हियर अल्फा, बीटा, गामा, देन ट्राइक्लिनिक इज आल्सो शेप. सो दीज आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ क्रिस्टल. तो क्रिस्टल के शेप्स कितने हो सकते हैं? क्यूबिक हो सकता है, टेट्रागोनल हो सकता है, ऑर्थोरोम्बिक हो सकता है, मोनोक्लिनिक हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, रोम्बोहाइड्रल हो सकता है, ट्राइक्लिनिक हो सकता है. तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है जीपैट 2021 में. आई विल एक्सप्लेन दिस. व्हाट आर द क्रिस्टल शेप्स ऑफ पर्टिकुलर ड्रग्स? जीपैट 21 में क्वेश्चन आ चुका है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज नथिंग बट द क्यूबाइडल शेप और क्यूबिक शेप. तो क्यूबिक और क्यूबाइडल शेप, so drugs which has a cubic shaped crystal. So sodium chloride and potassium chloride will have cubic shape. Drugs which will have a tetragonal shape. So tetragonal shape किसका होगा? इसका एग्जांपल क्या है? Sodium chloride and potassium chloride will have cubic shape. Your urea, potassium, hydrogen phosphate (PHP), urea and potassium dihydrogen phosphate, they will have a tetragonal. क्यूबिक होता है आपका सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड का. टेट्रागोनल क्रिस्टल शेप होता है आपका यूरिया, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट का. देन हेक्सागोनल शेप होता है आइस, आइस मतलब वाटर आइस एंड थाइमोल. थाइमोल जो है वाटर आइस जो है उसका हेक्सागोनल होगा. ठीक है. रोम्बोहाइड्रल शेप होता है, इसका एग्जांपल नहीं है. ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक होता है बेरियम सल्फेट एंड सल्फर स्टम. तो इसके ऊपर जीपैट 2021 में क्वेश्चन है. व्हाट इज द क्रिस्टल शेप ऑफ सल्फर स्टम? So it is a orthorhombic. ठीक है, क्रिस्टल शेप ऑफ सल्फर स्टम क्वेश्चन आ चुका है जीपैट 2021. अनदर इज नथिंग बट द मोनोक्लिनिक शेप. सो सुक्रोज एंड इपिड्रीन हाइड्रोक्लोराइड, सुक्रोज एंड इपिड्रीन हाइड्रोक्लोराइड. सुक्रोज मतलब शुगर, केन शुगर. सुक्रोज मतलब क्या? केन शुगर. सुक्रोज इज मेड ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज. ठीक है, सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज में दो यूनिट होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज. ठीक है, सुक्रोज इज नोन एज केन शुगर. क्यों उसको केन शुगर बोलते हैं? बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम
a molasses of sugar cane. Sorry, it is obtained from the sugar cane, so that's why it is known as a sugar cane sugar. Okay, and sucrose is also known as an invert sugar. Sucrose is also known as an invert sugar. This was again a question in GPAT 2023. सुक्रोज को इन्वर्ट क्वेश्चन इन्वर्ट शुगर बोलते हैं. सुक्रोज को क्या बोलते हैं? इन्वर्ट शुगर. इसके ऊपर जीपैट 2023 में क्वेश्चन आ चुका है. आप पेपर देख लो जीपैट 2023. इन्वर्ट शुगर इज ऑप्शन में एक ऑप्शन था सुक्रोज. सुक्रोज इज नोन एज इन्वर्ट शुगर. ठीक है, सुक्रोज इज नोन एज इन्वर्ट शुगर. सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड. सुक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड. डाई मतलब टू, उसमें ग्लूकोज होता है, फ्रुक्टोज होता है. सुक्रोज इज डाइसैकेराइड. इट इज नोन एज केन शुगर और इट इज नोन एज टेबल शुगर. केन शुगर भी बोलते हैं उसको, टेबल शुगर भी बोलते हैं. उसमें ग्लूकोज फ्रुक्टोज होता है एंड उनको उसको क्या बोलते हैं? इन्वर्ट शुगर. क्वेश्चन जीपैट 2023. सल्फासेटामाइड का क्रिस्टल शेप पूछा था जीपैट 2021. अनदर ट्राइक्लिनिक. ट्राइक्लिनिक शेप्स किसका होता है? ड्रग्स लाइक फिनोप्थैलिन. फिनोप्थैलिन आप बोलेंगे सर फिनोप्थैलिन क्या है? फिनोप्थैलिन इज इंडिकेटर बट इट आल्सो अ ड्रग. सो ट्राइक्लिनिक. सो फिनोप्थैलिन एंड कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट फिनोप्थैलिन का क्रिस्टल शेप होता है ट्राइक्लिनिक. सो आपको यहाँ पे एडिशनल पॉइंट्स लिखना है. जैसे मैंने सुक्रोज के बारे में बोला था, अभी फिनोप्थैलिन के बारे में मैं बोलने वाला हूँ जो आपको मालूम नहीं होगा. ठीक है, you have to write down. ठीक है, so what is phenolphthalein? Phenolphthalein is known as an indicator used in the titration. ठीक है, acid base titration में phenolphthalein indicator यूज करते हैं. But phenolphthalein is also a drug. So what is the use of phenolphthalein? It is a laxative. Laxative होता है. Phenolphthalein क्या होता है? Laxative. So it will increase the bowel formation. Phenolphthalein is a laxative. उसका crystal shape क्या होता है? Triclinic. Okay, so you have to remember. Okay, so again I would like to revise in a short. एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ आपके लिए और एक बार रिवाइज होगा. सो क्यूबिक शेप होता है आपका सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड का. टेट्रागोनल शेप होता है यूरिया पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट का. ठीक है, यूरिया एंड पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट. ठीक है, आपका हेक्सागोनल शेप होता है आइस एंड थाइमोल. रोम्बो हाइड्रल होता है, उसका एग्जांपल नहीं है. ऑर्थोरोम्बिक शेप होता है आपका क्रिस्टल का. क्रिस्टल ऑफ बेरियम सल्फेट एंड क्रिस्टल ऑफ सल्फासेटामाइड will have ऑर्थोरोम्बिक शेप. Crystal of sucrose and epidine hydrochloride will have monoclinic. Crystals of phenolphthalein and copper sulfate. Crystals of phenolphthalein and copper sulfate will have triclinic shape. Okay, very important. So, external structure of crystal. External structure of crystal is known as a habit. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है नाइपर. External structure of crystal is known as a habit. Habit किसको बोलेंगे? Habit बोलने हैबिट होता है ना आपको, किसी को स्मोकिंग का हैबिट होता है, किसी को ड्रिंकिंग का, वो हैबिट नहीं. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल इज नोन एज अ हैबिट. ओके, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल हैबिट्स. सो अगेन डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल्स देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिस्टल हैबिट्स. तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. सो नैप्थेलिन, फर्स्ट वन इज अ नैप्थेलिन. सो प्लेट काइंड ऑफ क्रिस्टल हैबिट इज देयर ऑफ नैप्थेलिन. प्लेट जैसे आपका क्रिस्टल हैबिट. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर नैप्थेलिन का कैसे दिखेगा? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थेलिन विल लुक लाइक अ प्लेट. सो इट इज नोन एज अ प्लेट. सो नैप्थेलिन हैज अ प्लेट काइंड ऑफ हैबिट. ओके, टोलबिटामाइड एंड साइक्लाइसिन. टोलबिटामाइड एंड साइक्लाइसिन will have tubular or tabular kind of external structure of crystals of tolbutamide and cyclazine. Tolbutamide क्या है? It is a anti-diabetic drug. It is a used in the treatment of diabetes. Cyclazine क्या है? It is a antihistaminic. ठीक है, इसका मैकेनिज्म वगैरह भी बोल सकता हूँ लेकिन आपको अभी बोल के कुछ फायदा नहीं. सोडियम क्लोराइड is known as a table salt, common salt. ठीक है, उसका क्रिस्टल हैबिट कैसा होगा? सोडियम क्लोराइड is having equant crystal habit. ये बाद में भी आएगा. सोडियम क्लोराइड has a equant crystal habit. Flucortisone acetate and triamcinolone acetamide. Flucortisone acetate and triamcinolone. Flucortisone, triamcinolone both are this drug belongs to steroid. ये क्या है? Steroidal anti-inflammatory drugs. So both have columnar habit. So crystals of flucortisone acetate and triamcinolone will look like a columnar. Then bladed. तो रिसोर्सिनॉल जो होता है, रिसोर्सिनॉल हैज अ ब्लेडेड काइंड ऑफ क्रिस्टल हैबिट. ब्लेड जैसा स्ट्रक्चर रहेगा रिसोर्सिनॉल. देन नैलिडिक्सिक एसिड हैज अ एसिकुलर टाइप ऑफ क्रिस्टल हैबिट. एसिकुलर मतलब ये प्रिज्म जैसे प्रिज्म. एसिकुलर इज आल्सो नोन एज प्रिज्म. तो एसिकुलर टाइप ऑफ क्रिस्टल हैबिट नैलिडिक्सिक एसिड.
तो देखो सल्फासिटामाइड के ऊपर जीपैट 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि क्रिस्टल शेप पूछेगी। देयर वाज अ क्वेश्चन इन जीपैट 2021, यू कैन गो एंड चेक द पेपर। ठीक है, क्रिस्टल शेप ऑफ सल्फासिटामाइड ऑर्थोरोम, ठीक है, ऑर्थोरोम। नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग्स अगेन। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल क्यूबिक क्रिस्टल शेप्स। ओके, इन दैट केस ऑल एक्सियल एंगल्स आर एट 90 डिग्री सेल्सियस। क्यूबिक में क्या होगा कि एक्सियल एंगल जो है वो सब क्या होंगे 90 डिग्री सेल्सियस। एग्जांपल इज नथिंग बट फेरस सॉल्ट, फेरस का क्रिस्टल, कॉपर का क्रिस्टल, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड एंड डायमंड, ऑल दिस विल हैव क्यूबिक शेप। टेट्रागोनल शेप किसका होगा क्रिस्टल का? सो टेट्रागोनल शेप में क्या होगा, और एंगल अगेन एक्सियल एंगल आर सेम। सो स्ट्रोमियम ऑक्साइड, magnesium oxide, sodium, okay, ammonium bromide. So these are the examples which are tetragonal. Orthorhombic shape किसका होगा? Orthorhombic shape in that iodine is there, potassium nitrate is there and rhombic sulfur. तो इसका शेप क्या होगा? ऑर्थोरोम्बिक। रोम्बोहाइड्रल किसका शेप है? क्रिस्टल शेप। so वो एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, सोडियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट, and so they will have rhombohedral. Okay, then hexagonal shape किसका है क्रिस्टल का? hexagonal shape of crystal, graphite, zinc oxide, cadmium sulfate. then monoclinic किसका शेप है क्रिस्टल शेप? सल्फर, बोरैक्स एंड शुगर, मोनोक्लिनिक याद रखो। ट्राइक्लिनिक किसका क्रिस्टल शेप है? देखो बोरिक एसिड S3BO3, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट। सो दे विल हैव ट्राइक्लिनिक शेप। ये एडिशनल है इंफॉर्मेशन, ये बुक में नहीं है। नाउ ये बुक में है सम एग्जांपल्स ऑफ सॉल्ट इन द ड्रग्स, सम एग्जांपल्स ऑफ सॉल्ट ऑफ ड्रग्स एंड देयर रिस्पेक्टिव क्रिस्टल शेप। ठीक है, एग्जांपल याद रखो, क्वेश्चन आ चुके हैं। नाउ क्रिस्टल शेप्स, ओके, नेम ऑफ ड्रग एंड क्रिस्टल शेप। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो है आपका टेबल सॉल्ट, पोटेशियम क्लोराइड जो है दैट इज अ, these salts will have cubic crystal shape. Okay, then urea, potassium hydrogen sulfate, they are tetragonal. यूरिया का, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट का टेट्रागोनल शेप होता है। थाइमोल का, आइस का, थाइमोल आइस, आइस मतलब वाटर आइस, यहाँ पे आइस मतलब वाटर आइस। थाइमोल एंड आइस विल हैव हेक्सागोनल शेप। ठीक है, बेरियम सल्फेट एंड सल्फासिटामाइड, सल्फासिटामाइड का है, सल्फासिटामाइड के बारे में इंफॉर्मेशन बोलता हूँ, देख लो। Sulfacetamide is a sulfonamide drug. It is a short-acting sulfacetamide. Sulfacetamide is short-acting sulfonamide derivative. Sulfacetamide is used as a ocular antibiotic. It is used in the case of eye drop. Ocular antibiotic. Sulfacetamide, ocular antibiotic. So barium sulfate, sulfacetamide will have orthorhombic. Barium sulfate and sulfacetamide has a crystal shape of orthorhombic. This was question in GPAT 21 आई थी, 20 में था या 21 में था, रिमेंबर सल्फासिटामाइड हैज ऑर्थोरोम्बिक। जैसे इसमें ड्रग कितने हैं देखो, ड्रग जहाँ पे लिखा है वो आप है। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज सुक्रोज एंड इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड। सुक्रोज एंड इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड विल हैव मोनोक्लिनिक। अभी यहाँ पे क्या आया, टर्म आ गया इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड। इफेड्रिन क्या है? इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड। इफेड्रिन इज अ ड्रग, इट इज अ sympathomimetic drug. It is a alkaloid obtained from Ephedra jediana, family Ephedraceae or Gentanaceae. ठीक है, so ephedrine is a alkaloid. It is a kind of pseudo alkaloid. क्या है? It is a pseudo alkaloid. ये सब information additional. ठीक है, so ephedrine is a alkaloid. It has a monoclinic. तो GPAT 2020 में सल्फासिटामाइड क्रिस्टल शेप पूछा है, तो नेक्स्ट में भी इफेड्रिन का पूछ सकते हैं, या फिर नेक्स्ट में भी फिनोप्थैलिन को पूछ सकते हैं, टोल्बिटामाइड को पूछ सकते हैं, फ्लूकोर्टिजोन को पूछ सकते हैं। तो जो ड्रग की क्रिस्टल शेप है उसके इंपॉर्टेंट है। सो रिमेंबर सल्फासिटामाइड ऑर्थोरोम्बिक, इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड मोनोक्लिनिक, सुक्रोज मोनोक्लिनिक, देन फिनोप्थैलिन एंड कॉपर सल्फेट, फिनोप्थैलिन एंड कॉपर सल्फेट ट्राइक्लिनिक। नेक्स्ट वन इज नथिंग बट द नैप्थैलिन। नैप्थैलिन ये क्रिस्टल हैबिट है, ये क्रिस्टल शेप्स हो गए। क्रिस्टल शेप मतलब जो क्रिस्टल का शेप होता है डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट ऑफ particles in the crystal lattice, crystal shape. Now external structure of crystal is known as a habit. External structure of crystal habit. Naphthalene has a crystal habit. Crystal shape of crystal habit is a plate. In case of tolbutamide, shape of crystal habit is a tabular.
In case of cyclizing crystal, habit shape is a tabular. In case of glucortisone acetate, triamcinolone, triamcinolone acetonide, columnar habit is there, right? Resorcinol का होता है ब्लेडेड शिफ्ट नैलिडिक्सिक एसिड, नैलिडिक्सिक एसिड का होता है एसिकुलर. ये नैलिडिक्सिक एसिड क्या है? इट इज द फर्स्ट कंपाउंड known as a urinary antiseptic. ये nalidixic acid मतलब क्या है? It is a first drug belonging to class known as a quinolone antibiotics. Quinolone antibiotics जो होते हैं उसमें का पहला ड्रग कौन सा आता है? Nalidixic acid. And after the modification of nalidixic acid, so that is the development of fluoroquinones like ciprofloxacin, ofloxacin, norfloxacin, gatifloxacin, moxifloxacin, proafloxacin. All these are known as a urinary antiseptics. तो nalidixic acid जो है फर्स्ट है. Nalidixic acid has an acicular crystal. Sodium chloride will have equal. This chart is very important. समझ में आया कि आपको ये चार्ट? Now what do you mean by crystalline form and what do you mean by amorphous form? So first one is nothing but the crystalline form. So in case of crystalline solid, there is a arrangement of particles in the crystal lattice in a regular geometric form. यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉर्न का एग्जांपल है. कॉर्न होता है ना आपका कनिस, कॉर्न का एग्जांपल देखो. ये इसको बोलेंगे आप एक यूनिट. सो दिस वन इज इट कैन बी regarded or it can be called as a unit. So if there is a orderly, if there is a regular arrangement of these units or particles in the crystal or systemic arrangement of particles in the crystal lattice or orderly arrangement of particles in the crystal lattice, that is known as a crystalline form. Because of orderly arrangement, यहाँ पे क्या है? systemic arrangement होता है किसका? particles का in the crystal lattice. Due to systemic arrangement, इसका energy क्या होता है? इसका energy बहुत ही कम होता है. energy is less. So energy is less in case of crystalline. अभी जो सिस्टम का एनर्जी कम है उसका मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री में जो सिस्टम का एनर्जी कम है वो स्टेबल होता है. तो एनर्जी इज लेस इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. ओके, एंड दैट्स व्हाई इट इज स्टेबल एंड दैट्स व्हाई इट हैज अ लो सोलिबिलिटी. सोलिबिलिटी क्या रहेगा इसका? कम रहेगा. एज अ लो सोलिबिलिटी. नाउ लेट्स कम टू द amorphous. What is amorphous form of compound? Amorphous is nothing but the random arrangement of particles in the crystals. इसको पार्टिकल बोलो एक. सो यहाँ पे क्या है? ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं. यहाँ पे कैसे भी अरेंजमेंट किया है, ये आपने नहीं किया है, ये नेचर नहीं किया है, लेकिन किया है. सो देयर इज अ रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन द क्रिस्टल लैटिस. सो दैट इज नोन एज अ amorphous form. ओके, amorphous form. नाउ क्रिस्टलाइन फॉर्म विल हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट. इसमें क्या रहेगा? मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा उसका? डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट. इट हैज अ डेफिनेट शेप एंड लो मेल्टिंग पॉइंट. लो मेल्टिंग पॉइंट, definite melting, low solubility, low energy. Amorphous will have no definite shape. इसमें कोई shape definite नहीं रहेगा. It will have high melting point as it has a higher energy. Random, because of the random arrangement, it has a high energy. इसमें energy क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा. High energy. That's why it has a high solubility. Higher energy and amorphous में energy ज़्यादा होता है, solubility ज़्यादा होता है. Right? I will explain this. This is just a diagram. So crystalline solid, so they will have a definite shape. There is a orderly arrangement. They are non-compressible. Definite shape होगा crystalline को, orderly arrangement, incompressible. They will have a definite melting point. Crystalline form example: sodium chloride, urea, benzene, penicillin, aspirin. का क्या होता है? crystalline solid. Sodium chloride crystal होता है, urea का crystalline solid होता है, benzene, penicillin का. They will have definite shape, orderly arrangement. That is a arrangement of particles in the regular geometric pattern. They are incompressible, having definite melting point. Examples बोला है. Crystalline form will have less energy. Crystalline form will have less energy and therefore less solubility and dissolution. Okay? Crystalline form of compound will have less energy, less solubility and dissolution. And bioavailability also. Dissolution ही कम है तो bioavailability भी कम है. Remember, now crystalline form they are used to produce a sustained released product. Crystalline form इसके लिए यूज करते हैं sustained release product. Example: protamine zinc insulin protamine zinc insulin injection. Example है उसका. ठीक है? Example क्यों है वो? Insulin क्या है? It is a hormone produced by cells of Langerhans, right? Pancreas. Insulin क्या है? It is a hormone which utilizes the glucose in your body. इसको diabetes है,
इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज mellitus, उसमें इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है. So insulin is used in the insulin dependent diabetes mellitus, and insulin, as it is a hormone, it is a very short acting. Okay, it is a hormone and that's why it is very short acting. Increase the duration of action of insulin. So it is a crystallized with the protamine and so protamine zinc insulin, which is in a crystal form. It is a crystalline solid. Protamine zinc insulin, so that has a longer duration of action. So they are used to sustain the release प्रोडक्ट. आपको इतना कंफ्यूज हो जाता है बाद में, आप इतना कंफ्यूज होते हो कि किसका सॉल्बिलिटी ज्यादा है किसका कम है, कौन सा सस्टेनेबिलिटी के लिए यूज किया जाएगा, कौन सा बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाएगा. रिमेंबर क्रिस्टलाइन फॉर्म विल हैव लेस सॉल्बिलिटी यूज्ड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ सस्टेन रिलीज. ओके, ऐसा क्वेश्चन पूछा तो. एंड amorphous is used for the enhancement of bio availability. What do you mean by amorphous? What do you mean by amorphous? So there is a random arrangement of particles in the crystal lattice. Amorphous will not have a definite shape. Okay, random arrangement of units, no definite melting point. इसमें melting point definite नहीं होता है. And examples of amorphous solid: glass, pitch, no biocin. तो glass जो होता है आपका glass मतलब जो कांच कांच pitch and no biocin. तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है. नो बायोसिन. नो बायोसिन इज अ एंटीबायोटिक व्हिच इज ए amorphous solid. वैसे तो बहुत सारे होता है जैसे वेल्प्रिक एसिड इज amorphous solid, क्लेटोइन वगैरह होता है. सो नो बायोसिन इज अ एंटीबायोटिक व्हिच इज amorphous solid. सो amorphous form as it has a more energy. amorphous form में क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है, बिकॉज देयर इज अ रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन द क्रिस्टल लैटिस एंड देयरफॉर सोलिबिलिटी क्या होगा इसका ज्यादा. सो मोर एनर्जी मोर सोलिबिलिटी, बिकॉज देखो amorphous में रैंडम अरेंजमेंट होता है, दैट्स व्हाई इट इज अ मोर एनर्जी. जिसका जो भी सिस्टम का एनर्जी ज्यादा होता है, सो दो सिस्टम व्हिच हैव हायर एनर्जी, सो दैट इज अनस्टेबल, दैट्स व्हाई इट इज द मोर सोलिबिलिटी. तो because of the higher solidity, because of the higher solubility of this amorphous form, it will have better therapeutic activity, it will have more bioavailability. Amorphous form, remember, amorphous form of drug is used to increase the bioavailability, and most commonly amorphous form ही use किया जाता है. Amorphous form is mostly used to enhance, to increase the bioavailability. So bioavailability क्या है, we have already seen. So availability of biologically active drug, that is nothing but the percentage or the fraction of drug that is being reached to a systemic circulation upon the from the site of administration. जहाँ से आपने ड्रग दिया है, इंजेक्शन दिया है या फिर ओरली दिया है, वो ड्रग स्टमक में से एब्सॉर्ब होके आपके ब्लड में कितनी मात्रा में गया है उसको बोलेंगे बायो अवेलेबिलिटी. ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर क्रिस्टलाइन फॉर सस्टेन रिलीज, amorphous for enhancement of bioavailability. Now crystalline and amorphous. Crystalline form and amorphous form, they cannot be easily distinguished by naked eyes. आपका आप देख के नहीं बोल सकते कि ये क्रिस्टलाइन है ये amorphous है. आप इजीली आप ऑब्जर्व करके नहीं बोल सकते कि ये क्रिस्टलाइन है या फिर amorphous है. Crystalline amorphous cannot be distinguished by casual observation. Example, for example, beeswax and paraffin. Okay, beeswax जो होता है, paraffin जो होता है, they looks like amorphous, but they are not amorphous. Beeswax, paraffin, आपने देखा ना तो ऐसा चिपचिपा beeswax कैसे नहीं, look like amorphous, but they are not amorphous. When they are heated and when they are allowed to cool, they slowly assumes or they slowly gets crystalline. You cannot say by naked eyes. Now, existence of drug in a different polymorphic form, known as a polymorphism. And different polymers will have different physicochemical properties, right? Like density. तो जैसे क्लोरोफेनिकॉल palmitate, एक क्लोरोफेनिकॉल palmitate नाम का एक ड्रग है एंटीबायोटिक, उसके तीन तीन क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं, क्लोरोफेनिकॉल palmitate A, B एंड C. इसमें का जो क्लोरोफेनिकॉल palmitate B होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है. जैसे कोका बटर है, कोका बटर इज अ suppository base, so it has a 4 polymeric form, alpha, beta, gamma and delta. So out of that, beta form is more stable. So मतलब डिफरेंस फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी हो सकता है उसका.
So existence of drug in a different polymorphic form is known as a polymorphism. Existence or appearance of drugs in a different polymorphic form is known as a polymorphism. Different polymorphs will have different physicochemical properties like density, melting point, solubility, and dissolution rate. So you have the study of polymorph is important while designing a dosage form. आपको मालूम होना चाहिए मेटास्टेबल पॉलीमर तो तीन टर्म आता है देखो कंफ्यूज करने के लिए जीपेट बैठा है तीन टर्म क्रिस्टलाइन एमॉर्फस अभी आया है मेटास्टेबल सो व्हाट इज मेटास्टेबल पॉलीमर मेटास्टेबल विल हैव इंटरमीडिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस इन दोनों के बीच में का है बीच में का मतलब गलत तरीके से मत लो बीच में का मतलब क्या क्रिस्टलाइन एमॉर्फस ये दोनों के बीच में क्या आता है मेटास्टेबल so metastable is nothing but the intermediate it is having properties intermediate between crystalline and amorphous so metastable will have a lower melting point metastable will have a lower melting point higher solubility than stable form तो stable कौन सा होता है stable form होता है crystalline crystalline is a stable form metastable has a lower melting point higher solubility and dissolution than stable form. Stable मतलब क्या? Crystalline. So metastable will have a higher solubility than crystalline. When two different polymorphs, they gets converted into stable. When polymorph gets converted to stable polymorph, okay, slowly, and the rate of conversion is negligible. Okay, they are known as a metastable polymer. They are preferred in the pharmaceuticals. For their unique physicochemical. For example, जैसे होता है विटामिन B2 मतलब क्या है C2B2 नहीं C2B2 को अलग विटामिन B2 मतलब राइबोफ्लेविन इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन ठीक है याद रखो सब कुछ रिवाइज कर सकते हो विटामिन B2 डिफिशिएंसी क्या होता है उसका चिलोसिस ब्रेकिंग ऑफ योर लिप्स में ब्रेक लिप्स के कॉर्नर्स ब्रेक हो जाएगा known as a chilosis deficiency of vitamin B12 वो अलग पार्ट है so vitamin B12 has a three different polymorph and they have different solubility so out of that metastable polymorph has a more solubility अभी याद रखो metastable will have properties in between crystalline and इसके बीच में metastable आएगा so crystalline has a lowest solubility metastable is more soluble than crystalline and amorphous has a highest solubility तो आपको जीपेट वाले बहुत ही शातिर होते हैं कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे आएगा वो आगे बाद में ठीक है स्टेबल पॉलीमॉर्फ मतलब क्या स्टेबल पॉलीमॉर्फ इट इज यूज्ड व्हेन मेटास्टेबल आर नॉट स्टेबल मतलब क्रिस्टलाइन स्टेबल पॉलीमॉर्फ इज यूज्ड व्हेन मेटास्टेबल इज नॉट नाउ ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी ये क्वेश्चन जीपेट में आ चुका है ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी आपके पास में क्या है यू हैव थ्री डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड ओके क्रिस्टलाइन इज देयर amorphous is there and metastable so crystalline so which will have a highest solubility remember amorphous form will have a highest solubility amorphous form will have a highest solubility and crystalline form will have a lowest solubility amorphous में random arrangement होता है एनर्जी ज़्यादा होता है उसकी वजह से solubility क्या है ज़्यादा है ठीक है crystalline में क्या है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है वहाँ पे एनर्जी कम होता है solubility क्या है लेस कम होता है metastable क्या है in between these two so lowest solubility is there of crystalline form so crystalline will have lowest solubility after that metastable will have intermediate solubility and after that amorphous will have highest solubility तो amorphous को सबसे ज़्यादा solubility होगा उसके बाद में metastable को होगा उसके बाद में crystalline को ठीक है तो क्वेश्चन आपको आता है arrange the following form of compound in their increasing order of solubility और in their decreasing order of solubility increasing order decreasing order आपको आना चाहिए ठीक है क्वेश्चन आता है arrange the different form of compound in their increasing order of solubility तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या increasing order में लिखा है क्रिस्टलाइन का solubility क्या होता है metastable का ज़्यादा होता है उसके बाद में amorphous का ज़्यादा होता है क्रिस्टल has less metastable has more and amorphous has a highest solubility अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है डिक्रीजिंग ऑर्डर ठीक है डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है तो amorphous पहले आएगा तो ये जो सिंबल है वो अलग आएगा ये
So amorphous have higher metastable and then crystalline. So increasing decreasing order of solubility. Question आ चुके हैं GPAT में 2 बार. We are just seeing the basic part. Crystal hydrates. Crystal hydrate मतलब क्या? During the crystallization process, जब crystallization होता है. So during the crystallization process, some drugs, some compounds will have a tendency. Some drugs, some compounds will have a tendency to associate with the water. To associate with the water or to get water entrapped within the crystal. जब क्रिस्टलाइजेशन होता है तो कुछ कंपाउंड का क्या है आदत होती है कि वाटर को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो वाटर के बिना जी नहीं सकते तो कुछ कंपाउंड वाटर के बिना जी नहीं सकते तो वो क्या करते हैं वाटर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं वाटर को अपने साथ में ही ले लेते हैं क्रिस्टलाइजेशन के दौरान सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सो क्रिस्टल्स some drugs will have association of water or some drug during the crystallization water will be entrapped in the crystal. Okay, the water can combine with the ions and neutral molecules during the water can combine with the ions and neutral molecules during crystallization. They are known as the hydrates. They are known as the hydrates, or they are known as the crystal. For example, caffeine hydrate. Caffeine hydrate मतलब क्या? Caffeine में water molecule है. Caffeine hydrate. थियोफाइलिन हाइड्रेट थियोफाइलिन में एम्प्लिसिलिन मोनोहाइड्रेट मोनो मतलब एक ही वाटर मॉलिक्यूल एम्प्लिसिलिन ट्राइहाइड्रेट एम्प्लिसिलिन ट्राइहाइड्रेट मींस एम्प्लिसिलिन सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट में 10 वाटर मॉलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट एंड दिस इज ऑफिशियल इन द आईबी ओके देन सोडियम कार्बोनेट ऑक्टेहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट hexahydrate sodium carbonate pentahydrate sodium carbonate when water molecule get entrapped or when drug crystallizes in association with the water molecule that is known as a crystal hydrate will have less solubility though there are two forms of crystal hydrate there are two forms of drug okay so one is known as anhydrous form and one is known as a hydrous form कंपाउंड का तो दो फॉर्म होता है अनहाइड्रस फॉर्म मतलब देयर इज नो वाटर मॉलिक्यूल इन द क्रिस्टल अनहाइड्रस फॉर्म मतलब देयर इज नो वाटर मॉलिक्यूल इन द क्रिस्टल एंड हाइड्रस फॉर्म मींस देयर इज अ वाटर मॉलिक्यूल इन द क्रिस्टल सो इफ इट इज अ one water molecule known as a monohydrate if it is a two water molecule known as dihydrate 3 trihydrate 4 tetrahydrate 10 decahydrate 8 octahydrate likewise that okay so anhydrous form of compound will have more water solubility anhydrous form of compound will have more water solubility and hydrous form of compound will have less water solubility. You have to clear. Basic clear करो सब GPAT basic के ऊपर है. Now you have to remember. Okay. So anhydrous form is preferred because of more solubility and dissolution than hydrous form. Crystal solvents. जैसे crystal hydrate में क्या होता था? Crystal hydrate में या फिर hydrates में क्या होता था? यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एंट्रैप होता है क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल को वाटर के साथ प्यार हो जाता है वाटर को ले लेता है अपने साथ में ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन वो बनता है हाइड्रेट्स अभी सॉल्वेंट्स क्या होता है रिप्लेस द वाटर विद द सॉल्वेंट अभी आपको मालूम नहीं वाटर नहीं है इसमें दूसरा कुछ सॉल्वेंट है जैसे बेंजीन है क्लोरोफॉर्म है ईथर है या फिर कोई भी सॉल्वेंट सो ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइजेशन if there is a association of drug with the solvent or if there is a entrapment of solvent in the crystal during the crystallization so it is known as a solvents okay and if that solution or if that solvent is the water then it is known as a hydrate okay? During the crystallization some part of solvent get entrapped in the crystal or compound may associate with the solution or solvent to form a solvent and if that solvent is a water then it is known as a crystal hydrate crystal solvents there is a if there is association or entrapment of solvent in the crystal known as a solvent also known as a pseudopolymer example क्या है इसका for example blue cortisone is crystallized in this n-pentanol so n-pentanol gets entrapped in the flucortisone crystal and that's why it is known as a solvent okay again in the similar way succinyl sulfathiazole is the again sulfur drug succinyl sulfathiazole it is a prodrug ये क्या होता है prodrug होता है ये सब फार्माकोलॉजी में
मेरे में आ जाता है बाद में, ये बाद में succinylthiazole is a longer acting sulfonamide. It is a prodrug. Okay, it is a crystallized with the N-pentanol. Again, succinylsulfathiazole will get associated with the N-pentanol, and that's why it's a solvent. Okay, now okay, solvents will have more solubility. Solvent will have more solubility. Particularly succinylsulfathiazole solvent has a more solubility than non-solvated. मतलब non-solvated. आइसोमर, आपको ये इंफॉर्मेशन किसने दी होगा? आई गारंटी, कौन सा माइकल वाला जीपैट क्लास वाला जिसके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है? आइसोमर मतलब क्या? आइसोमर, व्हाट डू मीन बाय आइसोमर? when two compounds have same crystalline form, when two different compounds will have same crystalline form, when two different compounds will have same crystalline form, and one of such compound can grow, can develop in the saturated solution of another compound, it is known as a isopolymorphism. Phenomenon is, ये important है, एग्जाम में आएगा आपको और बाद में पछताओगे आप, सर ने पढ़ाया था हमने ध्यान नहीं दिया. Isomers, they are having same crystal. Okay, two compound, if they are having same crystal, so there are chances that one compound may be developed in the saturated solution of another compound. Phenomenon is known as the isopolymorphism, and isopolymers will have same shape. For example, जैसे क्रोम आलम होता है, क्रोम आलम, क्रोम आलम, क्रोम आलम मतलब क्या? क्रोम कंटेनिंग आलम. आलम को हिंदी मराठी में बोलते हैं, पोटैश आलम जो होता है उसको तुरटी बोलते हैं. क्रोम आलम will have a structure of K2SO4 Cr2 SO4 3 times 24H2. So chrome alum is a isomorphic with the potash alum. Chrome alum is isomorphic with the potash alum. Potash alum का क्या है? पोटैश आलम मतलब है अपना त्रुटि. K2SO4 aluminum 2 SO4 3 times 24H2. So potassium alum is isomorphic with the chrome alum. So examples are now solvents क्या होता है मैंने बोला है, again same thing. So when solvent of crystallization get entrapped into the crystal to form, remember solvents form will have more solubility than non-solvated form. Anhydrous form will have more solubility than hydrous form. Hydrate means what? If the solvent is water and water get entrapped into the crystal during crystallization, is the hydrate. Anhydrous form will have more. Okay, so I will save this happening.